हे एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 के बारे में। तो कारो 2020 applies on every company including a foreign company, but these companies are exempt from the applicability of CARO. These companies are insurance company, banking company, charitable organization that is sectionized licensed company, OPC, private company and small company. Okay, तो जो private company है that also needs to be somehow small, and the criteria for it is the paid up capital and free reserves must be up to 1 crore, borrowings up to 1 crore and turnover from all the operations continuing plus discontinuing up to 10 crores. Okay, the CARO shall not apply to auditors report on consolidated financial statements except clause 21. All the clauses of CARO that is from 1 to 20 are applicable for every company except CFS, consolidated financial statements, and the clause 21 applies only to CFS, consolidated financial statements, and not to any other company. Let's say we have a holding A and it has subsidiary B, C and D. So clause 1 to 20 applies to companies B, C and D, and clause 21 applies only to company A. So this is the applicability and for the CFS applicability. So this is the thing. इसको नोट्स में से देखते हैं हम. So applicability every company including a foreign company. Following company are exempt: insurance company, banking company, section 8 license company, OPC and small company. Private company not being a subsidiary or holding of public company having paid up capital plus reserve surplus up to 1 crore as on balance sheet date, borrowings up to 1 crore from bank or financial institution at any time during financial year, and revenue including revenue from discontinuing operations up to 10 crore during financial year as per financial statements. The next is auditors report to contain matters. CARO shall not apply to auditors report on CFS except clause 21 of paragraph 3. अब इसके जो है टोटल 4 पॉइंट्स हैं कारो में. एक फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी, सेकंड इज फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू कंटेन मैटर्स. इसमें होंगे पैराग्राफ 3 और 4 वाले सब मैटर्स एप्लीकेबल होंगे. पैराग्राफ 3 में बात करते हैं कौन कौन से मैटर्स होंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट में इंक्लूड होंगे, एंड पैराग्राफ 4 बोलता है कि जो जो मैटर्स में आपको अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर मिल रहा है उसके आपको रीजन भी डालने पड़ेंगे. अगर आप ओपिनियन नहीं अपनी डाल रहे हो तो उसका भी रीजन डालना पड़ेगा कि आप ओपिनियन क्यों नहीं डाल पा रहे हो. तो आइए बात करते हैं मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द कारो रिपोर्ट. ओके, सो अब हम अगर स्टार्टिंग से चलेंगे तो आप फिर से डर जाओगे कि भाई ये बड़ा दिख रहा है. तो हम बात कर रहे हैं फिफ्थ क्लोज से, दैट इज डिपॉजिट्स से. So let's see from the clause 5 of the CARO 2020, that is deposits. तो इन सब क्लोजेज में बस आपको अंडरस्टैंडिंग लेने की नीड है कि पॉइंट समझने की नीड है. उसके बाद इन क्लोजेज में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा और जो आपको याद नहीं हो रहा. तो आइए क्लोज 5 देखते हैं, डिपॉजिट्स. With respect to deposit accepted or deemed deposits, whether directives issued by RBI, and Section 73 to 76 of Companies Act, which also talks about deposits, have been complied with. If not, state the nature of contraventions. Okay, तो अगर आपने इनके साथ कंप्लाई नहीं किया तो आरबीआई ने या फिर कंपनी लॉ बोर्ड ने, एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया होगा. अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया है कंपनी लॉ बोर्ड ने, एनसीएलटी ने, आरबीआई ने या कोर्ट ने, तो वेदर वी हैव कंप्लाइड विद सेम. सबसे पहले deposits accepted or deemed deposits, whether directives have been complied. If we have not complied with the directives and the sections, there must be an order passed by the company law board and CLT, and if they have passed an order, whether we have complied with the same. So deposits clause में बस इतना ही है. Next clause is clause 6, cost records. So as per section 148, some companies are required to maintain cost records. So in this clause we have to see whether maintenance of cost records have been specified by central government for this company of which we are doing the audit and preparing the report. If yes, whether we have maintained the records, made and maintained the records. So this clause talk about this कि क्या हमको बनाने हैं as per section 148 जो CG ने स्पेसिफाई कर रखा है, और अगर हाँ क्या हमने बनाए हैं. The next is statutory dues. Whether company is regular in depositing statutory dues. So there are two types of statutory dues: undisputed statutory dues और disputed statutory dues. Undisputed like GST, PF जो हमको पता है हमको पे करने हैं, उनको पता है गवर्नमेंट को कि हमको लेने हैं.
गवर्नमेंट को लेनी है. So whether company is regular in depositing statutory dues, if yes then okay, if not then we have to see arrears outstanding on last day of financial year for more than 6 months from date they become payable. Like we are on the 31st March sitting and we have to see the amount of arrears outstanding for more than 6 months, like all the arrears which are become due before 1 October, they become payable for more than 6 months on 31st March. So we have to report on them. Okay. So whether company is regular in depositing undisputed statutory rules, if not, we have to see arrears outstanding on last day of financial year for more than 6 months from date they become payable. Okay. The next is if not deposited due to any dispute. If there is any dispute going on and because of that dispute we have not deposited the statutory dues, then we have to mention the amount involved and the forum where dispute is pending. Okay. There is a note that mere representation to department is not a dispute. Okay. The next clause is income disclosure. Whether previously unrecorded transaction in books surrendered or disclosed as income in tax assessments, if yes, whether properly recorded in books during year. So if there is a transaction which we have not reported in the income tax and we have not recorded as in books of accounts, but that transaction is noticed by the tax department or in the tax assessment during the year, whether we also have recorded that transaction in our books during the year. कि कोई ट्रांजेक्शन है जो हमने इनकम टैक्स में नहीं दिखाई थी बट टैक्स असेसमेंट में वो उनके सामने आ गई या हमने अपनी शो कर दी कि ये हमने पिछले साल दिखाई नहीं थी, तो क्या हमने वो सेम ट्रांजेक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर ली. बस ये क्लोज इस बारे में बात कर रहे हैं. तो अब तक हमने ये जो 4 क्लोज देखे हैं, 5th 6th 7th 8th, इसको हम उस नोट्स में से देख लेते हैं. सो द क्लोज 5th टॉक्स अबाउट द डिपॉजिट्स. Okay. So in respect of deposit accepted by company or amounts which are deemed to be deposits, where the directives issued by RBI and provisions of section 73 to 76 or other relevant provision of Companies Act and rules made thereunder have been complied with. If not, nature of such contraventions to be stated. So if we have not complied with this, there must be some cases going on. So if any order has been passed by CLB, NCLT or RBI or any court or any tribunal, whether same have been complied with or not, then is the cost record. 6th clause. Whether maintenance of cost record have been specified by CG under section 148 of Companies Act and whether such accounts and records have been so made and maintained. Okay. Next is statutory dues. Whether company is regular in depositing undisputed statutory dues including GST, PF, ESI, income tax, sales tax, service tax, custom duty, excise duty, whatever, to appropriate authorities, and if not, extent of arrears outstanding statutory dues as on last day of financial year concerned for a period of more than 6 months from date they become payable shall be indicated. And this is for the undisputed, this is for the disputed, where statutory dues have not been deposited on account of any dispute, then amounts involved and forum where dispute is pending shall be mentioned. A mere representation to concerned department shall not be treated as dispute. Okay. The next is income disclosure, where whether any transaction not recorded in books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in tax assessment under Income Tax Act 1961. If so, whether previously unrecorded income have been properly recorded in books of accounts during the year. So ये हमारे 5 क्लोज हो चुके हैं 21 में से. So 16 are remaining. ये आगे भी आसानी है, तो आइए देखते हैं. Next is clause 9, loan repayment. Loan which we have taken and we have to repay, whether the company have defaulted in repayment of loan or payment of interest thereon. If yes, period and amount of default to be reported and we have to make a table. Then whether company has been declared as willful defaulter, whether company has used whether term loan applied for a purpose for which loan was raised, या कंपनी ने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था कि उसी पर्पस के लिए यूज किया है. whether short term loan have been utilized for long term purpose. ऐसा तो नहीं कि short term loan long term purpose के लिए यूज कर दिया. ये पॉइंट था क्या टर्म लोन उसी पर्पस के लिए यूज किया जिस पर्पस के लिए लिया था. क्या कंपनी एक विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हो चुकी है? क्या कंपनी ने लोन टाइमली रीपे किए और पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट भी टाइमली पे की है? अगर हाँ तो पीरियड अमाउंट ऑफ अगर इनमें डिफॉल्ट किया है क्या? अगर हाँ तो पीरियड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड. Okay, so these points are if company has taken a loan to meet the liability of subsidiary, joint venture and associates,
Okay, and the next is if company has taken a loan against the securities of subsidiary, joint venture, and associate. So these 2 points are all related. For the SJ subsidiary, joint venture, associate, whether company has taken funds to meet obligations of SJA, whether company has raised loans on pledge of securities of SJ. इसमें तो कंपनी ने SJA के लिए लोन लिया है, इसमें कंपनी ने SJA की सिक्योरिटीज को प्लेज करके लोन लिया है. So these are 5 points of loan repayment. तो इनको नोट्स में से देखते हैं कि वेदर कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन और अदर बोरोइंग्स और इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लेंडर. इफ यस, कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया. अगर हाँ, पीरियड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू रिपोर्टेड इन द फॉर्मेट, नेचर ऑफ बोरोइंग, क्या बोरोइंग थी, इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, किस लेंडर से ली थी, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज डिले और रिमार्क्स इफ एनी. Okay. The next question is whether company is declared a willful defaulter by bank or a financial institution, whether term loan were applied for purpose for which loan were obtained, if not amount of loans were diverted and purpose for which it is used, whether funds raised on short term basis have been utilized for long term purpose, if yes, nature and amount to be indicated, whether company has taken any fund from any entity or a person on account of or to meet obligation of its SJA. If so, details thereof with nature of such transaction and amount in each case, whether company has raised loan during year on pledge of securities held in SJA companies. If so, give details thereof and also report if company has defaulted in repayment of such loan raised. इसमें कंपनी ने लोन लिया है to meet the obligations of SJ. इसमें कंपनी ने लोन लिया है on the pledge of securities of its SJ. So this was the clause of loan repayment, the loan which we have taken and we have to repay. सो दीज आर बेसिक पॉइंट कि कंपनी ने क्या टाइमली रीपे किया है, हमने यूज फॉर डिफॉल्टर तो नहीं होगी, टर्म लोन उसी पर्पज के लिए यूज किया, शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यूज नहीं कर लिया, और ये एसजे वाले दो पॉइंट हो गए, सी जॉइंट वेंचर और C8 वाले. द नेक्स्ट इज आईपीओ एफपीओ एंड अदर अलॉटमेंट्स, वेदर अमाउंट रेज्ड from the IPO and FPO used for the purpose for which it was raised, and if there is preferential allotment or private placement, whether section 42 and 62 have been complied with, and fund raised applied for purpose for which it was raised. The next is fraud, whether any fraud by the company or on the company has been noticed or reported during the year. If yes, nature and amount involved to be indicated. Okay. The next is whether report filed by auditors with central government under section 133 143 to 12 have been considered. इसमें जो 1 करोड़ से ऊपर अगर फ्रॉड हो तो ऑडिटर को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये क्लोज होता है, ये हम देखेंगे. तो क्या कंपनी ने वो पॉइंट कंसीडर कर लिया है, अगर फ्रॉड हुआ है तो वो 143 to 12 वाला रिपोर्ट कंसीडर कर लिया है. नेक्स्ट इज कंसीडर वेदर कंपनी हैज कंसीडर, ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स. So these are the points on the fraud. So the 10th and 11th point. So whether money raised by way of IPO, FPO applied for purpose for which those were raised, whether company has made any preferential allotment or private placement. तो section 42 and 62 का comply हुआ है या नहीं, और fund raised for the purpose have been used for purpose for which it were raised. Next is fraud, whether any fraud by company or on the company have been noticed or reported during year. If yes, nature and amount involved to be indicated, and whether any report under section 143(12) of Companies Act have been filed by auditors. If yes, then whether we have considered it, or whether auditor has considered whistleblower complaints received during year by the company. The next is the clause 12 is for the Nidhi company. Whether Nidhi company complied with the net owned fund to deposit in the ratio of 1:20, whether company is maintaining 10% of unencumbered term deposits, and whether there is default in payment of interest and repayment of principal. If yes, then give details thereof. The next clause is for the related party, whether transaction with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of the Companies Act, and details disclosed in financial statement, whether it's details disclosed in financial statement. This is guided by the Ind AS. Comment the Ind AS on the comment section. The next is for the internal audit, whether internal audit system commensurate with the size and nature of business, and whether report of internal audit कंसीडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कि क्या इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो बना रखा है साइज एंड नेचर और बिजनेस के हिसाब से ही है ना, छोटा बड़ा तो नहीं है, और उसके अलावा कि या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंसीडर किया. द नेक्स्ट इज नॉन कैश ट्रांजेक्शंस विद डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड विद द डायरेक्टर्स in doing this transaction, whether provision of section 192 of Companies Act have been complied with. So ये देखना है इसमें हमको.
क्या जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन डायरेक्टर या उनके पर्सन कनेक्टेड विद द डायरेक्टर्स हुई है, क्या उसमें 192 का कंप्लाई हुआ है? द नेक्स्ट क्लोज इज क्लोज 16 एनबीएफसी। एनबीएफसी में अपने 4 पॉइंट्स हैं, so these 2 points are correlated and these 2 points are correlated. So 1 2 3 4 3 points में थर्ड पॉइंट में भी ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं. So first 2 are for the registration. Whether company is required to be registered under 45 IE of RBI. क्या कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेने की नीड है? अगर हाँ तो क्या कंपनी ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है? Okay. Whether company is required to register under 45 IE of RBI. If yes, whether registration have been obtained. The next is whether company is conducting any non-banking financial or housing financial activity without obtaining a valid certificate of registration. क्या कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिए बगैर? ओके. द नेक्स्ट क्लोज इज फॉर द CIC. So fourth is if group has more than one CIC, indicate number of CIC. Okay, and the third point is whether company is a CIC. If yes, whether companies continue to fulfill the criteria of having being a CIC. Okay, and if the company is an exempted CIC, whether company is still fulfilling the criteria. Okay, so these are the 4 points. These 2 relates for the from the registration, and these 2 are of the CICs. These are, I think, very easy points. Okay, so let's move on to the next clause 17, cash losses. If any cash loss is incurred during the year and immediately preceding financial year, state the amount of cash loss. Cash loss क्या होगा? If there is a loss, from that loss we will decrease the depreciation and provision and other non-cash item, then we have a cash loss. तो अगर इस साल में प्रीवियस ईयर में कोई भी कैश फ्लो है तो हमको उसका अमाउंट इंडिकेट करना है. द नेक्स्ट इज रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर. अगर इस साल कोई रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर हुआ है, वेदर इश्यूज ऑब्जेक्शन एंड कंसर्न रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर हैव बीन कंसीडर्ड बाय द इनकमिंग ऑडिटर. तो इसका एक क्लोज भी होता है प्रोफेशनल एथिक्स में, वो आप कमेंट करके बताइए. सो इफ देयर इज द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, वेदर issues, objection and concern raised by outgoing auditor have been considered by the incoming auditor. The next is clause 19, going concern. On basis of financial ratios, aging, expected date of realization of financial assets and payment of financial liabilities and the management plans, whether auditor is of the opinion that there is no material uncertainty exists as on date of auditor's report and कंपनी अपनी लायबिलिटी को मीट कर पाएगी बैलेंस शीट डेट पर जब भी वे फॉल ड्यू होंगी विद इन 1 ईयर फ्रॉम बैलेंस शीट डेट. ओके, कि आज हम ऑडिटर रिपोर्ट दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं हो रही और कंपनी अपनी लायबिलिटी पे कर पाएगी फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट अप टू 1 ईयर ऑफ द लायबिलिटीज टू मीट इट्स लायबिलिटी एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू. इनके बेसिस पर फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग और इनके बेसिस पे इसका एक ऐसे भी होता है जो गोइंग कंसर्न को गाइड करता है, ऐसे 570. तो जब भी इसका आंसर दिया जाएगा तो उसमें 570 का रेफरेंस भी दिया जाएगा. तो 570 क्लोज 19 क्या कहता है? ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड मैनेजमेंट प्लान्स, वेदर ऑडिटर्स ओपिनियन दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एज ऑन डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. ऑडिटर्स रिपोर्ट हम देंगे जून, जुलाई, अगस्त जब भी देंगे, दैट कंपनीज capable of meeting its liability at balance sheet date which is 31st March and as and when they fall due within 1 year from balance sheet date, within means that is from 31st March to 31st March के बीच में जब भी कोई भी liability आ रही है कंपनी उसको मीट कर पाएगी on the basis of this auditor is giving this opinion. Okay, the next is CSR, corporate social responsibility. The company is required to make a corporate social responsibility. उसकी कुछ applicability होती है. अगर वो applicable CSR कंपनी पे हो रहा है तो कंपनी has to put out amount of 2% of average net profit of past 3 years. तो कंपनी को एक अमाउंट निकालना होता है. तो इफ द अमाउंट इज यूज्ड फॉर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कि कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा अपना, ठीक है, और इफ द अमाउंट इज यूज्ड फॉर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. सो इफ द अमाउंट, इफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो वेदर कंपनी हैज ट्रांसफर्ड अनस्पेंट अमाउंट विद इन 6 months फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7. अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा की बात हो रही है तो क्या कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर अनस्पेंट अमाउंट शेड्यूल 6 में जो फंड बताया इसमें डाल दिया है क्या? और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि तो क्या अनस्पेंट अमाउंट स्पेशल अकाउंट में डाल दिया है जो 135(6) में बताया गया है. एंड द लास्ट क्लोज इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में. सो क्लोज 21 अप्लाइज ओनली टू CFS
and not on any other company, and clause 1 to 20 applies on all the companies except CFS. Okay, so CFS में हमको 21 में हमको क्या बताना है, any qualification or adverse remark by respective auditor in CARO, अगर हमारी सब्सिडरी कंपनीज के कारो रिपोर्ट्स में कोई भी क्वालिफिकेशन और वर्क्स रिमार्क्स है, अगर हाँ तो हमको बताना है कि किस कंपनी में है और कौन सा पैरा नंबर है. Any qualification or works remark by respective auditor in CARO of companies including in CFS, if yes, details of companies and para number of CARO containing qualification and works remarks. Okay, so इसको जल्दी से यहाँ से देख लेते हैं. फ्रॉड की हमने बात कर ली थी, निधि कंपनी की बात आई. Complied with the term fund to deposit ratio 1:20, made in 10% of unencumbered term deposits, whether there has been a default in payment of interest or repayment thereof is for details thereof. The next is related parties. All transactions are in compliance with 177 and 188, and details have been disclosed in financial statement as per applicable accounting standards. Internal audit have been commensurate with size and nature of business, and whether reports of internal auditor for period under audit were considered by statutory auditor. Non-cash transaction, whether the company has entered into non-cash transaction with directors or person connected with him. If so, whether provision of 192 have been complied with. The next is NBFC. Clause 16, whether company is required to be registered under 45 IE, if so, whether registration have been obtained. 2 are for the registration, 2 are for the CIC. Second, for the registration, whether company has conducted any non-banking financial or housing financial activities without a valid certificate of registration from RBI, whether company is a CIC as defined in regulation from RBI, if so, whether it continues to fulfill criteria of CIC, and in case company is exempted or unregistered CIC, whether it continues to fulfill such criteria. Next is whether group has more than one CIC as part of the group. If yes, indicate number of CICs. The next is cash losses. Whether company has incurred cash loss in financial year and in immediately preceding financial year. If so, state amount of cash losses. Next is resignation of auditor. Whether there have been any resignation of statutory auditor during year. If so, whether auditor has taken into consideration issues, objection or concern raised by outgoing auditor. And then there is going concern on basis of these points: financial issue, aging and expected realization of financial asset and payment of financial liability, other information accompanying financial statement, auditor's knowledge, board of directors and management plans, whether auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on date of auditor report, that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year from balance sheet date. Okay, then is the CSR, whether in respect of other than ongoing projects, and whether any amount remaining unspent, this is for the ongoing project. Whether in respect of other than ongoing project, company has transferred unspent amount to fund specified in schedule 7 to companies that within a period of 6 months of expiry of financial year, and whether any amount remaining unspent pursuant to any ongoing project has been transferred to special account in compliance with section 135(6) of Stat Act. Then is the CFS, whether there have been any qualification or adverse remarks by respective auditor in CARO reports of companies included in CFS. If yes, indicate details of companies and paragraph number of CARO report containing qualification or adverse remark. So these are the last clauses, and then we have some clause from the beginning of the chapter, some beginning clauses. So those are, the first clause is PPE and intangible assets. तो ये भी अपनी जो स्टार्टिंग के 4 क्लोज है भी बहुत ज्यादा आसान है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं. सो फर्स्ट क्लोज इज पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स. पीपी में हमको देखना कि शोइंग फुल पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी और सिचुएशन डिटेल भी होनी चाहिए. इंटेंजिबल एसेट में शोइंग फुल पर्टिकुलर्स. वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ पीपी, एंड फॉर इंटेंजिबल एसेट्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स. वेदर physically verified by management, and if there is any material discrepancy, if yes, then whether it is properly dealt within the books of accounts. Whether title deeds of immovable property held in name of company, क्या immovable property कंपनी के नाम पे ली गई है, क्या कंपनी के नाम पे ही है. अगर नहीं तो हमको बताना है डिस्क्रिप्शन, कैरिंग अमाउंट किसके नाम पर है, क्या प्रोमोटर डायरेक्टर रिलेटिव के नाम में है, पीरियड एंड द रीजन फॉर द हेल्ड इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन. Whether company has revalued its PPE or intangible assets. If yes, then whether it is revalued by the registered valuer. Okay, and if the revaluation is more than 10%, indicate the amount of change, and whether there is any proceeding initiated under Benami Transaction Prohibition Act. So these are the 5 points. Whether company is maintaining proper records, whether physically verified by management, title deeds held in the name of company, revalued PP or intangible assets, and proceeding initiated under Benami Transaction Prohibition Act. So this was the clause 1. So clause 1, whether company is maintaining proper records showing full particulars, quantitative details and situation of PP, intangible assets,
physically verified by management, material discrepancy were noticed or have been poorly dealt with in the books, whether title deeds are in the name of the company, if not, provide details in this table in this format, whether company has revalued PP and whether it is by the registered valuer, and if there is change 10% or more, indicate the change. Whether any proceeding have been initiated or pending against the company under Benami Property and Benami Transaction Prohibition Act 1980. So whether company has appropriately disclosed details in the financial statement. Next clause is inventory. Whether physical verification of inventory. ये सेम ही क्लोज है, इसमें कुछ खास नहीं है इन्वेंट्री वाले में. फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे हुआ है, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है 10% और उससे ज़्यादा की फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, क्या उसको प्रॉपर्ली बुक्स में डील कर लिया गया है. The next point in the inventory is whether company has been sanctioned working capital limits of more than 5 crores at any point of time during the year. Okay, क्या कंपनी को 5 करोड़ से ज्यादा वर्किंग कैपिटल की लिमिट अलॉट हुई है ड्यूरिंग द ईयर. ओके, एंड इफ वेदर द क्वार्टरली रिटर्न्स, अगर उसको हुई है तो कंपनी हर क्वार्टर में बैंक को कुछ स्टेटमेंट या रिटर्न देगी. तो क्या जो स्टेटमेंट और रिटर्न कंपनी ने बैंक को दिया है वो बुक्स के साथ मैच हो रही है. वेदर क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल्ड बाय कंपनी आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स. So this was the clause second, inventory. Whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by management, and whether in opinion of auditor, coverage and procedure of such verification of management is appropriate. Whether any discrepancy of 10% or more in aggregate of each class of inventory were noticed, and if so, whether they have been properly dealt within the books of accounts. The next is whether during any point of time of year company has been sanctioned working capital limits in excess of rupees 5 crores in aggregate from bank or financial institution on security of current assets. Whether quarterly returns or statement filed by company with such banks or financial institution are in agreement with books of accounts of company. If not, give details. So this was clause 2 inventory. This was 1 PP and intangible assets. Second was for the inventory, and then there is the third clause, loan investment guarantee security, and then there is the fourth clause, section 185 and 136 के बारे में इसमें बात होती है. So this was the last clause mainly. So loan investment guarantee security, इसको हम लिखेंगे LIGS, loan investment guarantee security. Loan also means the advances in the nature of loans. So whether during year company has provided loan guarantee or security, if so, indicate aggregate amount and balance outstanding of such loan guarantee or security provided to subsidiary, joint venture or associate. क्या ड्यूरिंग देयर कंपनी ने कोई लोन गारंटी या सिक्योरिटी दी है? अगर हाँ, तो टोटल अमाउंट जो हमने दिया है और आज जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है जो हमने दिया है, किसको? सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को भी बताओ उनका अमाउंट, और हमने इनके अलावा किसको दिया उसका भी एग्रीगेट अमाउंट और बैलेंस आउटस्टैंडिंग. फर्स्ट क्लोज ये कहता है whether during year company has provided loan guarantee security, if so indicate aggregate amount and balance outstanding of such provided to SJ and other than SGA. ओके, तो ये क्लोज, ये जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा? उन एंटिटीज पे जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देना है, लाइक NBFC. द सेकंड पॉइंट इज whether terms and conditions of loans or advances in nature of loans, investment provided, guarantee, security are not prejudicial to company's interest. भाई उनके TNCs कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है ना. ओके, अब ये जो हम लोन की बात करें, ये लोन हमने दिया हुआ है, और जो हमने नीचे बात की थी लोन की, वो लोन हमने लिया हुआ था, रीपेमेंट ऑफ लोन करके कुछ एक नीचे क्लोज था, लोन रीपेमेंट वाला. ये लोन हमने ले रखा था, इसमें हम रीपे कर रहे थे, और ये जो ऊपर वाला क्लोज है इसमें हमने लोन दिया हुआ है. यस, सो इसमें हमारे दो पॉइंट हो गए. थर्ड पॉइंट इज लोन एंड एडवांसेस. अब इसमें जो पॉइंट्स है ना, इसमें बात हमने की थी लोन की, गारंटी की और सिक्योरिटी की. इसमें हमने बात की थी चारों की, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी. अब इसमें हम बात करें लोन की और एडवांसेस की. एडवांसेस कौन से? एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स. अब वो एल में ही इंक्लूडेड है इसमें. लोन्स एंड एडवांसेस, whether schedule of repayment of principal and payment of interest have been stipulated, कि हमने बता रखा है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैसे पे करना है, ठीक है. एंड वेदर रिसिप्ट्स आर रेगुलर, जैसे हमने बता रखा है क्या रिसिप्ट हमको वैसे ही मिल रही है या नहीं. ओके, सो नेक्स्ट इज इफ अमाउंट ओवरड्यू, इफ देयर इज एन अमाउंट ओवरड्यू, स्टेट अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज. अमाउंट ओवरड्यू होगा तो वो अमाउंट बताओ जो 90 दिन से ज्यादा का ओवरड्यू है, और अगर 90 दिन से ज्यादा का ओवरड्यू है तो क्या हमने स्टेप्स ले लिए हैं रिकवरी करने के लिए, वेदर स्टेप्स फॉर रिकवरी हैज बीन टेकन. नेक्स्ट इज पॉइंट ई, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस. अब इसमें भी हमने बात की है लोन्स एंड एडवांसेस की.
not investment guarantee security के loans and advances fallen due during the year, okay, whether loans and advances fallen due during the year have been renewed, extended or fresh loans have been granted to settle overdues of existing loans given to same parties. अब मान लो किसी पार्टी का 1 लाख का लोन इस साल खत्म हो रहा है, ड्यू हो रहा है, हमको उससे पैसे लेने आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमने उसका लोन रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया या फ्रेश लोन उसी पर्सन को दे दिया जिसका अभी लोन वो हो रहा था, वो जो हमने न्यू लोन दिया है वो उससे हमारा ओल्ड लोन चुकाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं। अगर हो रहा है तो बताओ, स्पेसिफाई करो। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ड्यूज एंड परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट टू टोटल लोन और एडवांसेस, ओके। ये भी अप्लीकेबल नहीं होगा उस कंपनी में जिसका प्रिंसिपल बिजनेस इज टू प्रोवाइड लोन्स। Whether loan and advances have been fallen during the year, have been renewed, extended, or fresh loan have been granted to settle overdues of existing loans given to same parties, if so specify aggregate amount of dues of which have been renewed, extended, or fresh loans have been granted, and percentage of aggregate to total loan or advances. The next is whether granted loan or advances either repayable on demand. ऐसा तो नहीं कि हमने कोई लोन और एडवांस ग्रांट कर दिए जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है, या विदाउट स्पेसिफाइंग टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट। अगर हाँ, सो टेल द एग्रीगेट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ टोटल लोन ग्रांटेड एंड अमाउंट ग्रांटेड टू प्रोमोटर एंड रिलेटेड पार्टी, ओके। सो एंड द लास्ट क्लोज इज 185 and 186 in respect of loan investment guarantee security, whether provision of section 185 and 186 of the Companies Act 2013 have been complied with. So this was your CARO, इसको हम नोट्स में से भी देख लेते हैं। So whether during year company has provided LIGS to aggregate, if yes, aggregate amount and balance outstanding provided to SJ and other than SJ, whether TNCs are not prejudicial to company's interest in respect of loan and advances in nature of loan, ब्रैकेट का मतलब कि एडवांस इन नेचर ऑफ लोन्स, ये मैंने बार बार नहीं लिखा था तो इसलिए यहाँ मैंने ब्रैकेट डाल दिया खाली। So in respect of loan and advances in nature of loans, whether schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated, and whether repayments are regular or receipts are regular. If amount is overdue, state total amount overdue for more than 90 days, and whether reasonable steps have been taken for recovery. Whether loan or advance granted has fallen due during year, has been renewed, extended, or fresh loans granted to settle overdues for existing loans given to same parties, if so specify aggregate amount of such dues renewed, extended, or settled by fresh loans, and percentage of aggregate of total loans granted during year. Not applicable to companies whose principal business is to give loans, whether company has granted any loans or advances are they repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment. If so, specify aggregate amount, percentage thereof to total loans granted, aggregate amount of loans granted to promoters, related party. इसमें हमने लोन दिया था, उसमें हमने लोन ले रखा था, जो नीचे वाला अपना क्लोज था लोन रीपेमेंट, इसमें हमने लिया था तो हम लोन रीपे कर रहे थे। तो दिस वाज योर CARO 2020। और ये सब करने के बाद हम लास्ट में एक रिपोर्टिंग और करेंगे कि अगर उन सब में से हमने किसी में भी अनफेवरेबल और क्वालिफाइड रिमार्क डाला है, ओपिनियन दी है, तो ऑडिटर रिपोर्ट बताएगी उसका बेसिस कि किस बेस पे हमने वो डाला है। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम एक ओपिनियन अपनी नहीं दे पाएंगे तो हमको ये भी बताने हैं कि उसका इफेक्ट क्या है और हम ओपिनियन क्यों नहीं दे पाएंगे। Wherein auditor's report answer to any of questions referred in para 3 matters to be included in auditor's report 21 जो क्लोज है वो उसी para 3 में ही है, is unfavorable or qualified, auditor's report shall also state basis for such unfavorable or qualified answer as case may be, and where auditor is unable to express opinion, बता ही नहीं पा रहा, on any matter his report shall indicate such fact together with reasons as to why it is not possible for him to give his opinion, same कि भाई वो क्यों नहीं दे पा रहा, उसके रीजन बताइए। सो दिस वाज योर CARO 2020। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो बताइए। थैंक यू।